हेलो, नमस्कार। मैं हर नारायण, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और इसी सीरीज में मशीन डिजाइन के कई यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं और आज एक और टॉपिक है कोटर जॉइंट्स, जिसके बारे में हम देखेंगे कि कोटर जॉइंट्स क्या होते हैं और ये कहाँ पे प्रयोग में लाई जाते हैं, किस प्रकार से इनकी डिजाइन की जाती है। सबसे पहले a cotter joint is a temporary fastening and is used to connect rigid to coaxial rods or bars which are subjected to axial tensile or compressive forces. कोएक्सियल rods जिनके ऊपर टेंसाइल लोड्स भी हो सकता है और कॉम्प्रेसिव फोर्सेस भी आ सकते हैं, वहाँ अगर हम टेम्परेरी जॉइंट्स बनाना चाहें दोनों रोड्स के बीच में, तो हम कोटर जॉइंट्स का प्रयोग करते हैं। द लॉकिंग डिवाइस may be a taper pin or a set screw used on the lower end of the cotter. The cotter is usually made of mild steel or wrought iron. दोनों में किसी का भी बना हो सकता है, माइल्ड स्टील का हो सकता है या फिर wrought iron का भी हो सकता है। It is usually used in connecting a piston rod to the crosshead of a reciprocating steam engine. ज़्यादातर पुराने टाइम में इसका उपयोग, कोटर जॉइंट का उपयोग कनेक्टिंग पिस्टन को कनेक्टिंग करने के काम आता था रेसिप्रोकेटिंग स्टीम के साथ में क्रॉस हेड पर, जो कि अब के टाइम में लगभग खत्म हो गया, क्योंकि कहीं भी स्टीम इंजन सब नहीं प्रयोग में लिए जाते हैं। और कहाँ आता है piston rod and its extension as a tail or pump rod, strap end of connecting rod, यहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ कोटर जॉइंट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? सॉकेट एंड स्पॉकेट कोटर जॉइंट, स्लीव एंड कोटर जॉइंट, गिव एंड कोटर जॉइंट। इतने प्रकार के कोटर जॉइंट्स यहाँ हो सकते हैं। तीन प्रकार के: सॉकेट एंड स्पॉकेट कोटर जॉइंट, स्लीव कोटर जॉइंट, गिव एंड कोटर जॉइंट। सॉकेट एंड स्पॉकेट कोटर जॉइंट के बारे में हम बात करें, सबसे पहले तो वन एंड ऑफ द रॉड, यहाँ इस डायग्राम के अंदर देखिए सॉकेट एंड स्पॉकेट कोटर जॉइंट का संपूर्ण तरीके से डिटेल्ड व्यू दिखाया गया। फ्रंट व्यू, हाफ इन सेक्शन एंड साइड व्यू, दोनों व्यूज यहाँ दिखाए गए हैं, जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स कोटर के मुख्य रूप से तीन कंपोनेंट्स हैं। सॉकेट एक एंड पे, एक एंड की रोड के साथ में सॉकेट जुड़ा होगा, दूसरे एंड के साथ में स्पॉकेट जुड़ा होगा, और दोनों एक साथ जब कनेक्ट होंगे तो कोटर की मदद से जॉइंट होंगे। कोटर इस प्रकार का कंपोनेंट होगा जो दोनों को जोड़ने के काम आता है। विभिन्न dimensions of these joints are given. So one end of the rod, say A, is provided with a socket type of end as is shown in figure, and the other end of the other rod, say B, is inserted into a socket. The end of the rod which goes into a socket is called spoget. This is spoget and this is socket. A rectangular hole is made in the socket and spoget. A cotter is then driven tightly through a hole in order to make the temporary connections between the two rods. The load is usually acting axially
but it changes its direction, and hence the cotter joint must be designed to carry both the tensile and compressive loads. The compressive load is taken up by the collar on the spoget. This is the collar on the spoget. So mostly compressive load is bear by this collar. In design of socket and sprocket cotter joints means to find out various dimensions which are illustrated in the figure. So which the different dimensions are such as d equals to diameter of the rods, d1 equals to outside diameter of socket, d2 equals to diameter of spoget or inside diameter of socket, d3 outside diameter of spoget collar, t1 thickness of spoget collar, t4 diameter of socket collar, c equals to thickness of socket collar, b equals to mean width of cotter, and t equals to thickness of cotter, l equals to length of cotter, a equals to distance from the end of the slot to the end of the rod, sigma t permissible tensile stress for the rod's material, tau s permissible shear stress for the cotter material, and sigma c permissible crushing stress for the cotter material. तो इस सारी डायमेंशंस का हमको पता लगाना होता है डिजाइन ऑफ द cotter joint के अंदर. The dimensions for a socket and sprocket cotter joint may be obtained by considering the various modes of failure as discussed below. So the steps, first step in design of cotter joint is failure of the rod in tension. So in first step of cotter joint design, failure, failure of the rods in tension. The rods may fail in tension due to the tensile load P. We know that area resisting tearing equals to pi by 4 multiplied by d square. Since tearing strength of the rods equals to pi by 4 multiply d square multiplied by tensile stress of the rod material, equating this to load P, we have P equals to pi by 4 multiplied by d square multiplied by sigma t. From this equation, diameter of the rods d may be determined. So इस प्रकार से जो पहला जो स्टेप है उसके हमने d फाइंड आउट करना रहता है डायमीटर ऑफ द रोड्स, जो कि d क्या है डायग्राम के अनुसार सॉकेट एंड की जो रोड है उसका डायमीटर भी d है और स्पोगेट एंड है उसके साथ जो रोड कनेक्टेड है उसकी भी डायमीटर d है. सो एक बार d फाइंड आउट हो जाता है तो सेकेंड स्टेप में हम चलते हैं failure of spaghetti in tension across the weakest section or shallot. Since the weakest section of the spaghetti is that section which has slot in it for the cotter, as shown in the figure, therefore area resisting tearing of the spaghetti across the slot equals to pi by 4 multiplied by d2 का square minus d2 into t, as in the
diagram. Tearing strength of the spaghetti across the slot equals to pi/4 multiplied by d2 का square minus d2 multiply t का whole square of sigma t. So sorry, यहाँ pi/4 multiply by sigma 2 का square minus d2 multiply by t and bracket sigma t. Equating this to load P, we have P equals to, in bracket, pi/4 multiply d2 का square minus d2 into t bracket close sigma t. From this equation, the diameter of spaghetti or inside diameter of socket d2 may be determined. So यहाँ हमने क्या प्राप्त कर दिया, फेलर ऑफ स्पॉगेट इंटेंशन का जो सेकेंड स्टेप्स है इसके अंदर हमने D2 डायमीटर जैसे कि डायग्राम में है, D2 डायमीटर हमने फाइंड आउट कर लिए. सो दो डायमेंशंस D और D2 यहाँ हमने निकाल लिया. थर्ड स्टेप में फेलर ऑफ द रॉड और कोटर इन क्रशिंग. We know that area that resists crushing of a rod or cotter equals to D2 multiplied by T. So crushing strength equals to D2 multiplied by T, which is thickness of cotter, multiplied by sigma C, which is crushing strength of cotter. Equating this to load P, we have P equals to D2 multiplied T into sigma C. From this equation, the induced crushing stress may be checked. So यहाँ हमने D2 हमारे पास पहले से है, सिग्मा C गिवन है और यहाँ से हम इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी क्रशिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है यहाँ पे. Failure of the socket in tension across the slot. We know that the resisting area of the socket across the slot equals to pi/4 bracket d1 का स्क्वायर into d2 का स्क्वायर bracket minus in bracket d1 minus d2 bracket t. So since tearing strength of the socket across the slot equals to bracket pi/4 bracket d1 का स्क्वायर into d2 का स्क्वायर bracket close minus in bracket d1 minus d2 multiply by t bracket sigma t. Equating this to load P, we have P बराबर pi/4 d1 का स्क्वायर multiply by d2 का स्क्वायर minus d1 minus d2 bracket t and bracket sigma t. तो यहाँ से हम ये देखेंगे फेलर ऑफ द सॉकेट इन टेंशन का. यहाँ से हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे. यहाँ हमने D2 पहले से फाइंड आउट कर लिया है, ऊपर सिग्मा टी हमारे पास गिवन है और यहाँ हम D1 कैलकुलेट कर सकते हैं. पांचवें स्टेप में इन द फिफ्थ step failure of cotter in shear. Considering the failure of cotter in shear as shown in the figure, since the cotter is in double shear, therefore shearing area of the cotter equals to 2b multiplied by t. Shearing strength of the cotter equals to 2b into t into shear stress.
Equating this to load P, we have P equals to 2B into T into shear stress. So from here, from this equation, width of the quarter B is determined. क्वार्टर की यहाँ जो विड्थ है जो कि क्वार्टर डबल शेयर में है, इसलिए जो एरिया है उसको हमने डबल किया है और ये एरिया डबल एरिया है वो कंप्लीटली पी फोर्स के अगेंस्ट में रजिस्ट करेगा, इसलिए हमने पी फोर्स के अगेंस्ट में इसको रखा है। सिक्स्थ स्टेप, फेलर ऑफ द सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग। Considering the failure of socket collar in crushing as shown in figure, we know that area that resists crushing of socket collar equals to D4 minus D2 multiply T. Crushing strength equals to D4 minus D2 into T into sigma C. So equating this to load P, we have P equals to D4 minus D2 multiplied by T multiplied sigma C. यहाँ से हमको एक और डायमेंशन मिल जाएगी। From this equation, the diameter of socket collar D4 may be obtained. यहाँ से D4 हमको सॉकेट की पता चल जाएगी। सातवें स्टेप में, in the sixth step, failure of socket and in shearing. Since the socket end is in double shear, therefore area that resists shearing of socket collar equals to 2 bracket D4 minus D2 into C. Shearing strength of socket collar equals to 2 in bracket D4 minus D2 in bracket C multiplied by shear stress. Equating this to load P, we have P equals to 2 in bracket D4 minus D2 into C into shear stress. From this equation, the thickness of socket collar C may be obtained. So, from here, C can be calculated. In step 8, failure of rod end in shear. Since the rod end is in double shear, therefore the area resisting shear of the rod end equals to 2A into T2. Shear strength of the rod end equals to 2A multiplied by D2 multiply shear stress. Equating this to load P, we have P equals to 2A into D2 into shear stress. From this equation, the distance from the end of the slot to the end of the rod A may be obtained. So now in next step, failure of spaghetti collar in crushing. Considering the failure of the spaghetti collar in crushing as shown in figure, we know that area that resists crushing of the collar equals to in bracket pi by 4 d cube का square d3 square multiplied d2 square. So crushing strength of the collar equals to pi by 4 d3 का square multiplied by d2 का square into sigma c. Equating this to the load P, we have P equals to pi by 4 d3 square into d2 square into sigma c. From this equation, the diameter of the spaghetti collar D3 may be obtained. So, considering the failure of
the spoget collar in shearing as shown in figure, we know that area that resists shearing of the collar equals to pi d2 into T1 and shearing strength of the collar equals to pi d2 into T1 into shear stress. And equating this to the load P, we have P equals to pi d2 into T1 into shear stress. From this equation, the thickness of spoget collar T1 may be obtained. So now failure of cotter in bending. So this is the condition. ऐसा भी हो सकता है कि जो कोटर है वो बेंड हो जाए, शेयरिंग में डबल शेयरिंग में फेल नहीं हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फेल हो सकता है। तो उस केस में इन ऑल द अबव रिलेशंस इट इज अज्यूम्ड दैट लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द various cross section of the joint, but in actual practice this does not happen and the cotter is subjected to bending. In order to find out the bending stress induced, it is assumed that the load on the cotter in the rod and is uniformly distributed, while in the socket and it varies from 0 at the outer diameter d4 and maximum at the inner diameter d2 as shown in the figure. So P upon 2 and P upon 2, like this is load is distribution here from center to out directions, and here this is like that d4 minus d2 upon 2 and d4 minus d2 upon 2 1 by 3 is here. So now the maximum bending moment occurs at the center of the cotter and is given by maximum bending moment is equals to P upon 2 in bracket 1 upon 3 multiply d4 minus d2 upon 2 plus d2 upon 2 bracket close minus P upon 2 into d2 upon 4. So equals P by 2 in bracket d4 minus d2 upon 6 plus d2 upon 2 minus d2 upon 4 bracket close. So equals to P upon 2 in bracket d4 minus d2 upon 6 plus d2 upon 4. We know that section modulus of the cotter is z and equals to t into b square upon 6, and bending stress induced in cotter sigma b equals to m maximum upon z equals to p upon 2 in bracket d4 minus d2 upon 6 plus d2 upon 4 upon t multiplied by b square upon 6 equals to p in bracket d4 plus 0.5 d2 upon 2t into b square. This bending stress induced in the cotter should be less than the allowable bending stress of the cotter. The length of cotter in these steps L is taken as 4d. Some remaining dimensions can be calculated by some fixed ratios, which is L is taken as 4d and the taper in cotter should not exceed 1 in 24. In case the greater taper is required, then a locking device must be provided. The draw of cotter is generally taken as 2 to 3 mm, and now some more dimensions. When all the parts of the joint are made of steel, the following proportions in terms of diameter of the rod D are generally adopted. So various dimension proportions are D1 equals to 1.75 D, D2 equals to 1.21 D, D3 equals to 1.5 D, D4 equals to 2.4 D,
A equals to C equals to 0.75 D, B equals to 1.3 D, L equals to 4 D, T equals to 0.31 D, T1 equals to 0.45 D, E equals to 1.2 D. Taper of quarter equals to 1 in 25 and draw of quarter is equals should be 2 to 3 mm. If the rod and quarter are made of steel or wrought iron, then permissible shear stress equals to 0.8 of sigma t, means tensile stress, and crushing stress equal to 2 in 2 times of tensile stress may be taken. So this is all about the design of quarter joint. Okay, thank you.